we have to open this radiator cap which is there, and this is the container, extra container. This is the radiator. So we are flushing the full extra. बंद करो थोड़ा बंद करो, लगाओ पाइप लगाओ, मैं थोड़ा हाँ वो उसमें ना ये कुछ डाल के. And here you can see behind there is a drain to drain all the radiator water. So we have to remove it and drain all the radiator water and put coolant inside that. पूरा निकला नहीं वो बंद थोड़ा घुमा दो. Okay. Now we are draining and cleaning that thing, and we are draining it. साइड से बाहर से साफ करो, पूरा गंदा हो बाहर से साफ करो. लेवल पता नहीं चलता. ड्रेन दैट फुल वाटर. दूसरा पानी डालना पड़ेगा बाद में, पानी बाद में नहीं, एक बार फिर से क्लीन करने के लिए थोड़ा डाल के उसमें थोड़ा इधर उंगली रखो और गिरेगा पानी. नीचे नीचे उंगली. नीचे का ये टाइट किया. नहीं उसमें से एक बार जैसे पानी छोड़ेंगे. अच्छा बस नीचे का अलग है ना. नीचे का टाइट करो. No, how that black oil is going? That is not from here. Then? The old container. इसमें कूलेंट में पानी भी डालना पड़ेगा. हाँ बाद में, पहले पूरा कूलेंट भरेंगे. 1 लीटर लेगा.